A very warm welcome to my channel, my dear friends. Welcome to part 2 of Western Thinkers. आज इस वाली वीडियो में मैं आपको एरिस्टोटल और मैकियावेली कराऊंगी और साथ के साथ जो आगे वाले आने वाले थिंकर्स हैं उनका एक ओवरव्यू दे दूंगी, जस्ट उनका नेम बता दूंगी कि करना क्या है इसके आगे. As we have already discussed in part 1, the main thing you have to focus while studying any thinker is the formula T3B-KSC. Okay? Books, theory, theme, timeline, context, critic, keywords, and statements of the scholar. Because whatever you are preparing for, will be asked by you in objective form. तो objective जब भी पेपर आता है तो उसमें ये वाली सारी चीजें ज्यादा important हो जाती है. Like it can come in the match the following. One side you can have the name of the Western thinkers, the other side you can have the name of books, or the theory could be asked by you and asked by the examiner from you, and even the statements could be asked who among the following has this statement, or the critic very rarely to some very famous or classical thinkers critic do come, but not always the critics are being asked for, but the maximum thing जो चीज ज्यादा पूछी जाती है वो बुक्स और थ्योरी पे ही घूमता है. फिर उसके बाद स्टेटमेंट, फिर उसके बाद क्रिटिक, और फिर जो टाइमलाइन, थीम और कॉन्टेक्स्ट है वो आपकी समझ के लिए है. तो जो मैंने आपको किए हैं बताए हैं, इसमें मैं आपको टाइमलाइन और थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद से करने हैं. और इवन किसी ऑथर की बुक्स अगर मैं नहीं बताती हूँ, इवन देन इट इज अंडरस्टूड यू हैव टू राइट डाउन देयर बुक्स टू. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू टू व्हाट थिंग्स दैट यू शुड नॉट ओमिट. सो दीज आर द थिंग्स, ये तो करने ही करने हैं, प्लस इसके अलावा कुछ और कहीं पे एक्सटेंट है तो वो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूंगी. मैंने आपको प्लेटो तक करा दिया था, अभी एरिस्टोटल पे आते हैं. एरिस्टोटल वाज द वन हु एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, क्योंकि उससे पहले पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं थी. इट वाज बीइंग स्टडीड मोर लाइक क्लासिकल्स और सबकी लाइफ की बायोग्राफीज वगैरह पढ़ना, और इट वाज मोर लाइक अ लिटरेचर काइंड ऑफ, बट ही एक्चुअली institutionalized political science. Could you name the एक्चुअली आई कुड नेम इट मोर, जो एक यूनिवर्सिटी टाइप या एकेडमी टाइप ये एरिस्टोटल ने बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी? इफ यू नो दैट डू कमेंट बिलो. इनके अंदर एरिस्टोटल जब पढ़ेंगे तो आप इन चीजों पर ज्यादातर ध्यान दीजिएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कलेक्टिव जस्टिस, एरिस्टोटल का रेवोल्यूशन पे, स्टेट पे, जस्टिस पे क्या थॉट है. उनके कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, मैन एज अ सोशल एनिमल, अगेन इट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग बीइंग टॉक्ड बाय एरिस्टोटल टू. फैमिली के ऊपर भी उनका, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी के ऊपर भी उनका क्या कंसेप्ट रहा है, क्या इनके थिंक रहे. क्योंकि ऑलरेडी प्लेटो की जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्लेवरी पे कुछ कुछ बोला था. तो एरिस्टोटल was he in the line or he contradicted to Plato? This also could be read by you here. Concept of citizenship I already narrated before, and classification of constitution, as well as do find out what is mixed constitution given by Aristotle, and Aristotle on revolution. This is also to be done. If you want to go a step ahead, do compare Aristotle's revolution with the Marx idea or notion of revolution. So it will be complete for you here, Aristotle. Then the other things you should do by yourself is timeline, the theme, and the context in which he is talking about, because the time and context are interrelated to each other. And the books, you should write it down by yourself. I'll tell you if any important books do come in front of me. See, Machiavelli is known as father of realism. So is Aristotle known as father of political science. And Plato, what is he known as? Father of ethics. Okay. Socrates is known as father of ethics, and Plato is known as father of philosophy. Aristotle is known as father of political science, and then Machiavelli is known as father of realism. His books, these are the books, The Prince and the Discourse of Levi, and he was a famous, Machiavelli was a famous thinker who gave the notion that a king should be both a fox and a lion. So is Cordelia giving so many other chronologies and other allegories for a king in India too. Cordelia भी ऐसे ही कुछ कुछ कह रहे हैं कि भाई king should be dash dash dash.
ये चीज आप फील कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जब पढ़ेंगे उसमें जब कौटिल्य आएगा तो उसमें जैसे यहाँ पे मैकियावेली आपको बता रहे कि किंग शुड बी लाइक फॉक्स एंड लॉयन, वैसे ही मैकियावेली भी आगे जाके बोलेंगे लाइक king should be like donkey, the king should be like crow, the king should be like crane. There will be many more, like 16 to 18 more examples given by Kautilya, but here we are talking about Machiavelli, so I'll stick here to Machiavelli only. And the classification of government given by Machiavelli, the statescraft. See, nowadays Machiavelli is much more important, because whatever we talk about, it is like a Machiavellian politics, Machiavellian state. So Machiavelli comes time and again. So you don't have to read much about Machiavelli, but specifically what the things are to be read from a realist notion of Machiavelli, these books. He's the father of realism. Why he is known as father of realism, and his statescraftship, his differentiation between politics and ethics should be done by you. This much should be sufficient for Machiavelli. And in next videos, I'll tell you about liberal scholars. But just for some students who are just a step ahead and they want to know that what all things should be covered, uh, this slide is for you. Liberals, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, to be particular, the theory of justice and all, Robert Nozick, utilitarian, Bentham and Mill, then enlightenment, and or you can even call him an egalitarian also, Immanuel Kant. Marxist is much more important. You will read Marxism too extensively here. So I have jotted down all the Marxist scholars here. And will also, if you have time, also do feminism, Hannah Arendt. This is like, if you have time, then do jump for this. But till here, it is much more important for JNU EE per se. Okay, I wish you all the best. Thank you so much.